In this video lecture, once again welcome to all my dear students. According to your watching time, a very good morning, a very good afternoon and a very good evening. In this video lecture, we will solve the remaining questions of this practice set 6.1. Now, the questions that we are going to solve, these questions are of slightly different type, थोड़ा सा अलग टाइप का है. So let's see what kind of question is there and how to solve it. Look here, this is your sixth question. Students, this is your sixth question. In this sixth question, there are 12 sub questions. See question number 1. Prove that sin square theta upon cos theta plus cos theta is equals to sec theta. Prove that. It means we will prove left hand side is equals to right hand side. In this question there is no doubt left hand side is already equals to right hand side. But now the question is how we will prove it. कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल टेक एनी वन साइड, कोई भी एक साइड हम लोग कंसीडर करेंगे एंड सॉल्व इट इन सच अ वे दैट अदर साइड कम्स. कोई भी एक साइड कंसीडर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करना है कि दूसरा साइड आ जाए. नाउ one more question is there. Which side we consider in this question? Which side we should consider? कौन सा साइड हमको कंसीडर करना चाहिए? तो साइड वही कंसीडर करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा टर्म हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें हो, जिसको हम लोग इजिली चेंज कर सकते हैं. You see, in left hand side there are two terms. There are two terms in left hand side. This is your first sub questions. Sin square theta upon cos theta plus cos theta is equals to sec theta. In this question we will prove that this left hand side is equals to this right hand side. Now in most of the question consider left hand side. So in this question we consider left hand side. Right here left hand side. In first line write what is the left hand side. Left hand side is sin square theta upon cos theta plus cos theta. This is our left hand side. अब इसको सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व करना है कि ये साइड आ जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ see this is a fraction sin square theta upon cos theta. This is a fraction, this is also a fraction. बट अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं. यू कैन डिवाइड एनी नंबर एनी क्वांटिटी बाय वन. देयरफॉर ईच नंबर इज अ फ्रैक्शन. एवरी नंबर, ईच नंबर, all the numbers are always a fraction because of we can divide any number, any quantity by 1. Therefore this is also a fraction. Now this is the addition of fraction. How to add these two fractions? One more example. Suppose that we have a number 4 upon 3 plus 2. How to add these two fractions? Then this 4 write the same plus 3 2 ja 6 whole divided by 3. By applying the same method we can write this sin square theta plus cos theta into cos theta. You know cos theta into cos theta is cos square theta. Now whole divided by this cos theta. Sin square theta. Now numerator is sin square theta plus cos square theta. This is first identity. You know this is equal to 1. Now we replace this sin square theta plus cos square theta by 1. तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं. एंड डिनोमिनेटर इज
कॉस थीटा। क्या अप्लाई किया यहाँ पर? यहाँ आपको रीजन लिखते जाना है। वी अप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equals to 1. Now student, 1 upon cos theta, 1 upon cos theta, we know that this is equal to sec theta because of cos theta into sec theta, this is equal to 1. Therefore sec theta is equals to 1 by cos theta. या आप डायरेक्ट ये रीजन लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ 1 by cos theta is equal to sec theta. Now students see this sec theta is right hand side. Now write here right hand side. Therefore left hand side, this left hand side हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया और सॉल्व किया। आप देख रहे हैं क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। इट मींस left hand side is equals to right hand side, and in last line write your question. What is your question? Sin square theta upon cos theta plus cos theta, this is equals to 1. Write here hence proved. Hence proved. ये प्रूव हो गया। Left hand side is equals to right hand side. So students, note the solution. Now see your second sub questions. What is the second sub questions? Cos square theta. Cos square theta into 1 plus tan square theta. This is equals to 1. Left hand side is this cos square theta into 1 plus tan square theta. This is equals to 1. So in this question we consider left hand side. Left hand side is cos square theta into 1 plus tan square theta. This is left hand side. अब हम इसको सॉल्व करेंगे और क्या हमको लाना है? 1 लाना है. Now cos square theta and you know 1 plus tan square theta, this is student, this is second identity. 1 plus tan square theta is sec square theta. Now in place of 1 plus tan square theta we have to write sec square theta. कौन सा आइडेंटिटी यूज किया? 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. Now this cos square theta into sec square theta, we can write this cos theta into sec theta the whole square. 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इंडाइसिस लेसन में. If x raised to m into y raised to m, this is equal to x into y whole raised to m. If base is different and index is the same, then we write the product of bases with same power. Now in this step we use this rule. Therefore now cos theta into sec theta, and we know that sec theta is reciprocal of cos theta. Therefore in place of sec theta we can write 1 upon cos theta और a स्क्वायर ऐसे लगा दो. कौन सा फार्मूला यूज किया? sec थीटा हमने चेंज किया. क्या लिखा है? sec थीटा की जगह क्या लिखा है? 1 upon cos थीटा. तो यहाँ पर हम इसका रीजन लिखेंगे sec थीटा is equals to 1 by cos theta. This cos theta cancel out by this cos theta. Therefore in bracket 1, its square of 1 is 1. Now this is right hand side. Therefore this left hand side is equals to right hand side. Now in last write your question. What is your question? Cos square theta into 1 plus tan square theta is equals to 1. Hence proved. It means क्वेश्चन हमारा क्या? प्रूफ हो गया.
Now note down this solution. Now students, see your third question. This is your third sub questions. What is third sub questions? Under root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equals to sec theta minus tan theta. Again we consider left hand side. What is the left hand side? Under root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. This is left hand side of the question. This is in under root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. व्हाट इज द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर इज 1 प्लस sin थीटा. What is the denominator? 1 plus sin theta. What is its conjugate? What is its conjugate? Conjugate obtained by interchanging the middle sign. What is the middle sign? Plus. It changes its sign. This is 1 minus sin theta. 1 minus sin theta is conjugate of 1 plus sin theta. Now, in this type of question, we multiply numerator and denominator by conjugate of denominator. What is the denominator? 1 plus sin theta. Now its conjugate is 1 minus sin theta. Therefore we multiply numerator. Numerator is this, multiplying by 1 minus sin theta, and also denominator multiplying by the same 1 minus sin theta. कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि हम लोग न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. नाउ स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बोथ आर द सेम. देयरफॉर वी कैन राइट दिस इन स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर. जैसे x इंटू x आप क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर लिखते हैं. तो दोनों टर्म सेम है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बोथ द टर्म्स आर सेम but they are in product. Therefore we can write any one terms and make its square upon 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. This is like 1a plus b into a minus b. कुछ इस तरह से दिख रहा है. In both the terms, in both the bracket, terms are same, but in one bracket this is in plus and in second bracket this is in minus. A plus b into a minus b, this is a formula and this is equals to a square minus b square. So by using the same formula we can write here 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. a मिला लो जरा, a plus b into a minus b, दोनों ब्रैकेट में सेम है. a b, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय a स्क्वायर? a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म. स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म इज a and second term is b minus square of second term. Now square of first term is here 1 square minus square of second term is sin theta, its square is sin square theta. Now 1 minus sin theta whole square upon, student, this is 1 minus square of 1 is 1 minus sin square theta minus sin square theta. Under root 1 minus sin theta the whole square upon 1 minus sin square theta. This is equal to 1 minus sin theta the whole square, and you know this is a formula. This is formula obtained by first identity.
What is the first identity? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is first identity. By this identity, we have to find this is 1 minus sin square theta. In right hand side 1 is there. This sin square theta when taken right hand side becomes minus 1 minus sin square theta. In left hand side remaining terms are cos square theta. It means we have to change this 1 minus sin square theta by cos square theta. इसका मतलब जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. Therefore, in denominator there is 1 minus sin square theta and this 1 minus sin square theta is equals to cos square theta. Now both numerator and denominator we can take its square root easily. 1 minus sin theta the whole square, its square root is 1 minus sin theta, and upon cos square theta its square root is cos theta. Square root is clear now. How to find the square root? This is the whole square, then its square root, eliminate this square. जैसे x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट x इंटू x, इसका पेयर बन गया तो इसमें से 8x ले लिया. x इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर हट गया तो इसका स्क्वायर हट गया. 1 माइनस साइन थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर एंड नाउ दिस इज cos स्क्वायर थीटा, इट्स स्क्वायर रूट इज cos theta. Now separate the denominator with 1 and sin theta. Now this step we can change by 1 upon cos theta. Then write this minus sin theta upon cos theta. You know 1 by cos theta, 1 by cos theta is sec theta. 1 by cos theta is sec theta and sin theta upon cos theta is tan theta. कौन सा फार्मूला यहाँ यूज किया उसको यहाँ पर लिखना है. 1 बाई cos थीटा क्या यूज किया इसकी जगह? sec थीटा एंड आल्सो वी यूज sin थीटा अपॉन cos थीटा. दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा. Students, you see this is your right hand side. This is your right hand side. And now in last line write your question and write hence proved. Therefore this left hand side is equals to right hand side. In last line write your question 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta. This is equals to sec theta minus tan theta. Hence proved. Hence proved. This is your third sub questions. Now write down its solution. Now students, this is your fourth sub questions. What is fourth sub questions? Sec theta minus cos theta into cot theta plus tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू sec थीटा. बीच में डॉट लिखा है, डॉट मीन्स हो गया इंटू मल्टीप्लिकेशन. tan थीटा इंटू sec थीटा. तो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इन दिस क्वेश्चन वी कंसीडर अगेन लेफ्ट हैंड साइड sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा. Now in this left hand side this is sec theta. In place of this sec theta we can write 1 by cos theta by the formula. कौन सा फार्मूला यूज किया? चलो यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ. sec theta इसकी जगह पे क्या यूज किया? 1 by cos theta माइनस cos theta into cot theta. You know cot theta. अच्छा पहले tan theta लिख देते. tan theta is sin theta upon cos theta. You know this formula ना.
tan theta is equals to sin theta upon cos theta, and cot theta is reciprocal of tan theta. It means in place of cot theta we can write cos theta upon sin theta. इसका ही रेसिप्रोकल इधर लिख दो. दिस इज द वैल्यू ऑफ cot theta. तो सेकंड क्या हमने यूज किया, cot theta की जगह पे क्या यूज किया, cot theta is equals to cos theta upon sin theta, and in place of tan theta we use sin theta upon cos theta. जो फार्मूला आप यूज करोगे उसको आपको रीजन देना है. Now see this bracket, 1 upon cos theta minus cos theta. This is also a fraction na. 1 minus this cos theta into this cos theta is cos square theta. Now whole divide by cos theta. This is your first bracket, and in second bracket this is the addition of two fractions. Addition of two fractions, but their denominators are different. This is sin theta and this is cos theta. We cannot add, we cannot subtract any two fractions if their denominators are different. अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम लोग डायरेक्टली उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते विदाउट इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर. हाउ टू इक्वेट द डिनोमिनेटर? वी हैव टू रूल्स. One is by taking LCM and other is by cross multiplication. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज करेंगे. cos theta into cos theta is cos square theta plus sin theta into sin theta sin square theta upon product of denominator. Denominators are sin theta and cos theta. Their product is sin theta into cos theta. Now 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta. Now see first identity, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. This is first identity. Therefore from this identity we can find 1. This is right hand side 1. This cos square theta taken right hand side becomes in minus cos square theta, and left hand sides are sin square theta. It means in place of 1 minus cos square theta, you see ना 1 minus cos square theta, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin square theta. Therefore this 1 minus cos square theta replaced by sin square theta. sin square theta upon में क्या है, cos theta. Now into cos square theta plus sin square theta, this is equal to 1 by the same identity. Now in place of cos square theta plus sin square theta, this is equal to 1 upon sin theta into cos theta. These are two fractions in multiplication. ये दोनों ही क्या है, फ्रैक्शंस हैं, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हाउ टू मल्टीप्लाई एनी टू फ्रैक्शंस? व्हेन वी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस, देन न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर. देन sin square theta into 1, we get sin square theta, we get sin square theta, and in denominator cos theta into sin theta into cos theta, cos theta into sin theta into cos theta. This is sin square theta. You know sin square theta na? Sin theta into sin theta. This sin square theta we can write sin theta into sin theta upon what is in denominator, cos theta into चाहे ऐसे बना दो चाहे तो पॉइंट लिख दो, दोनों सेम है, इनटू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. नाउ दिस साइन थीटा कैंसिल आउट बाय दिस साइन थीटा. नाउ वी गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन दिस कॉस थीटा इनटू ये अपान में क्या है,
cos थीटा है, न्यूमरेटर 1 बना दूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा, तो दिस sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 बाई cos थीटा, मल्टीप्लाई करने पर सेम आएगा ना? यस, देन दिस sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan theta and 1 upon cos theta, you know this is sec theta. This is right hand side, tan theta into sec theta. Therefore we get right hand side. Now left hand side is equals to right hand side. Write here your question and write here hence proved. Clear now? Any doubts? No? Yes. Note this solution. Now this is your fifth sub questions. What is the fifth sub questions? Cot theta plus tan theta, this is equals to cosec theta into sec theta. Again in this question we consider left hand side. In first line write down what is the left hand side. What is the left hand side? Cot theta plus tan theta. Now this cot theta we can write cos theta upon sin theta. You know na this relation, cot theta is equals to cos theta upon sin theta, and similarly tan theta we can write sin theta upon cos theta. Right here formula. Which formula we used? Cot theta is equals to cos theta upon sin theta, and we used tan theta is equals to sin theta upon cos theta. Now this is again addition of two fractions. You know these denominators are different, then equate denominators by cross multiplication. Cos theta into cos theta is cos square theta plus sin theta into this sin theta is sin square theta upon product of denominators sin theta into cos theta, sin theta into cos theta. Now you see numerator is an identity. Numerator is an identity. Which identity? First identity, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. In place of this numerator we can write 1 upon sin theta into cos theta. Right here reason, cos square theta plus sin square theta is equals to 1. This term we can write in this way, sin theta 1 upon sin theta into 1 upon cos theta. इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कुछ डाउट है क्या कि ऐसे क्यों लिख सकते हैं? अरे इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 1 1 जा 1, sin theta into cos theta is this, means this term we can write in this way. Now 1 upon sin theta, 1 upon sin theta, you know this is cosec theta, and 1 by cos theta, you know this is sec theta. Now check your right hand side, cosec theta into sec theta, cosec theta into sec theta, this is right hand side. Therefore left hand side is equals to right hand side. Now write your question. यहाँ पर क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखो और यहाँ क्या लिखेंगे? Hence proved. This is your sixth sub questions. What is the sixth sub questions? 1 by sec theta minus tan theta. This is equals to sec theta plus tan theta. This is the left hand side. Now again we consider left hand side. In this question we again consider 1 by sec theta minus tan theta. This is left hand side. एक इजी मेथड बता रहे हैं. In this left hand side multiply its numerator and denominator by the conjugate of denominator. क्या मैं बोल रहा हूं? In the left hand side multiply
numerator and denominator by conjugate of the denominator. What is the denominator? Sec theta minus tan theta. Its conjugate obtained by interchanging its middle sign. मिडल साइन अभी क्या है? माइनस है. साइन इसका चेंज कर देंगे, sec theta प्लस tan थीटा. मतलब इस क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करना है? sec थीटा प्लस tan थीटा से. 1 upon sec theta minus tan theta. Now its conjugate is sec theta plus tan theta. You know conjugate now. How to obtain conjugate? By changing the middle sign. If middle sign is minus, then you change it by plus, and if middle sign is plus, then you change it by minus. किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बाय इट्स कॉन्जुगेट. इट्स कॉन्जुगेट इज sec थीटा प्लस tan थीटा, एंड आल्सो मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर sec थीटा प्लस tan थीटा. नाउ सी इट्स न्यूमरेटर. दिस sec थीटा प्लस tan थीटा when multiplying by 1, then we get the same sec theta plus tan theta upon. Now see this denominator. See carefully this denominator. Sec theta minus tan theta. Sec theta plus tan theta. In both the brackets, terms are same. In both the brackets, terms are same. But in one bracket, this is in plus, and in other bracket, this is in minus. Like this. A plus B, A minus B. We know this is equals to a square minus b square. So now in place of this denominator, we can write by using this formula. What is this? This is the square of first term, and now in question first term is sec theta, now it's square sec square theta. Now minus square of b, it means square of second term, and second term is tan theta, tan square theta. Now sec theta plus tan theta, its numerator, and denominator is sec square theta minus tan square theta. Sec theta plus tan theta, इसकी जगह पे लिख दिया 1. sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1. Why this is equals to 1? By using second identity. Second identity से हमने इसको लिखा. What is this second identity? 1 plus tan square theta. This is equals to sec square theta. यही ना second identity. Now this tan square theta taken in right hand side, sec square theta. This plus tan square theta when taken right hand side becomes in minus tan square theta. तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है? 1 बच रहा है. इट मींस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस टर्म वी कैन रिप्लेस बाय 1. तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं. देयरफॉर दिस डिनोमिनेटर रिप्लेस्ड बाय 1. नाउ sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा अपान में अगर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है. एंड चेक योर क्वेश्चन. दिस इज राइट हैंड साइड, sec थीटा प्लस tan थीटा राइट हैंड साइड आ गया, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे दिस इज राइट हैंड साइड. देयरफॉर वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. यहाँ पर क्वेश्चन लिखो. चलो एक बार मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ. व्हाट इज द क्वेश्चन? 1 बाय sec थीटा माइनस tan theta is equals to sec theta plus tan theta. Now hence proved. Pause the video and note down the solution. Now students, see your 7th sum questions. What is the 7th sub questions? Sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta, this is equal to 1 minus 2 cos square theta. In this question again we consider left hand side. Sin raised to 4 theta
minus cos raised to 4 theta. This is the left hand side of this equation. Now this sin raised to 4 theta, this sin raised to 4 theta we can write in this way: sin square theta its whole square. क्लियर है ना? इंडाइसिस लेसन में पढ़ा है x स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x रेज टू 2 इंटू 2. पावर का भी पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4. नाउ क्लियर ना? sin raised to 4 theta, this sin raised to 4 theta we can write in this way: sin square theta its whole square. ये देखो 2 2 जा 4, sin raised to 4 theta. Similarly cos raised to 4 theta we can write cos square theta the whole square. Now you see this is like a formula, a square minus b square. कुछ ऐसा ही दिख रहा है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म minus square of second term, like this formula, and this formula is equals to a plus b into a minus b, means first term plus second term into first term minus second term. Now first term is here sin square theta, a square को छोड़ दो, this is first term, a square को छोड़ दिया, first term is a and this is b square, therefore second term is b. Now in question sin square theta is base and its power is 2. This is first term, sin square theta is first term plus cos square theta, this is second term, this is in first bracket a plus b, first term plus second term. Now in second bracket first term minus second term. What is the first term? Sin square theta and second term is cos square theta. You know this is an identity and this is equals to 1. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया? 1 into sin square theta minus cos square theta. You know if any number multiplying by 1 then we get the same sin square theta minus cos square theta. Check your right hand side. In right hand side हमको जो प्रूफ करना है, in right hand side only one trigonometric ratio is there, only cos theta. सिर्फ हमको cos चाहिए, means हमको sin यहाँ से क्या करना है? एलिमिनेट करना है. यहाँ से sin को एलिमिनेट करना है. We know sin square theta प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो sin स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाय दिस आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस cos स्क्वायर थीटा टेकन दिस साइड क्या हो गया है? माइनस cos स्क्वायर थीटा. इट मींस वी रिप्लेस sin स्क्वायर थीटा बाय दिस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. देयरफॉर इन प्लेस ऑफ sin स्क्वायर थीटा, इधर लिख रहा हूं मैं, कंटिन्यू, इज इक्वल्स टू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा. इन प्लेस ऑफ दिस साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज ऑलरेडी हियर माइनस cos स्क्वायर थीटा. नाउ राइट दिस cos स्क्वायर थीटा. यू नो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा. अब ऐसा मत करना माइनस माइनस प्लस, ऐसा नहीं होता. माइनस इंटू माइनस प्लस. प्लस कब होता है? जब हम माइनस मल्टीप्लाइंग बाय माइनस करते हैं, देन वी गेट प्लस साइन. बट हियर वी सिंप्लीफाई माइनस x. If both the numbers have same sign, then we have to write the same sign and plus the number. x प्लस करेंगे कितना आएगा? 2x आएगा. Similarly here we can get 1 and minus cos square theta minus cos square theta is minus 2 cos square theta. Check, this is your right hand side. This is your right hand side. Now we get left hand side is equals to right hand side. Therefore our question is proved. What is question? Sin raised to 4 theta
minus cos raised to 4 theta is equals to 1 minus 2 cos square theta, hence proved. Pause the video and write the solution. Now remaining sums we will do in next video. Thank you.